everyone, welcome back. It's Jojo. What's up? What is this combination? What is this? I got so many DMs for it. Bharat Chauhan, who I have been listening to a little bit when I'm in that zone, um, has teamed up with Seedhe Maut. What? What? How? When? Kab? Kahan? Kyun? And the music is by Calm. Do you know what I mean? So it's there. Is it okay? Is it Bharat song or is it Seedhe Maut song? I'm just wondering. Music is by Calm, written performed by Bharat and Seedhe Maut. Guitars Bharat Chauhan, mix and mastered Vivek Thomas. Fine. All right. It's official audio. इसका video नहीं है. Video नहीं है ना? Okay, well, I have just reacted to a beautiful version of Encore in the Frappe Ash song, which is Ishka Da Jahan. And I can't. That avatar of Encore is something else. And इस गाने का नाम शायर है, and I know Bharat Chauhan's vibe, so I feel like this other side of Seedhe Maut will come out, which I love. So, okay, let's not guess anymore. Let's just get into it. I have high expectations. I'm just saying. 1, 2, 3, play. सब कुछ लिखूं या कुछ भी ना लिखूं, क्या ही लिखूं कि तुझको ना लिखूं। भटक रहा हूं इन अंधेरों में यूं ही, नाराज चांद है या तारों की कमी। जो ख्वाब देखे थे इन आंखों ने कभी, उन ख्वाबों की कहीं राख भी नहीं। कहा था मुझको जिसने घर कभी, रुखसत हुआ जला गया वो सभी। वफा से ही मुझे वफा की उम्मीद है, गम मिले तो आज वो ही करीब। मेरी शायरी से ना मुझको आंको, जहाँ कलम छोड़ूं मैं वहाँ मुझ में झांको। मेरी शायरी से ना मुझको आंको, जहाँ छोड़ूं मैं वहाँ मुझ में झांको। कलम मैं छोड़ू जब तुझे मैं दिखूंगा जैसा हूँ असल में मैं। दिखूंगा तुझे जब आंखों से पर्दा हटाएगी तो बगल में रहे। पर बगल में रहना तू असल ना किसी की नकल तू रहे। और अगर तू नकल तो तेरी इस कमल सी शक्ल का करूँ क्या मैं। ये शायरी है तेरे लायक नहीं, तो शायद तेरे किसी काम आएगी। और अब भी है खटकती तेरी आँख में, ये खाली घर है जैसे सूखी कोई नदी। और तू है जो आज चल परी बनी, पर है समंदर फिर भी खारा ही तो ही। ये खेल है ऐसा जिसमें फंस चुके हैं मैं और अभी। तो क्या हुआ अगर मैं लिखते वक्त बनूं शराबी, और इस समय इन चीजों में नहीं दिखती कोई खराबी। जब गुजरेगा ये पल तो आएगी नहीं तू याद जरा भी। मेरी शायरी से ना मुझको आंको, जहाँ कलम छोड़ूं मैं वहाँ मुझ में झांको। मेरी शायरी से ना मुझको आंको, जहाँ कलम छोड़ूं मैं वहाँ मुझ में झांको। गिरा के मुझे इन अंधेरों में माजी मेरा साथ आया है। गिरा के मुझे इन अंधेरों में माजी मेरा साथ आया है। अजब शख्स है, कत्ल भी किया और गले भी लगाया है, गले भी लगाया है। छू के जलाया है। जलना नहीं तो सूरज नहीं तो चांद है मेरा, दिखे तो है उजाला नहीं तो है अंधेरा। और हर रात तेरे अलग बेस, आँखों माऊं तुझको अलग देश। मैं अलग से गरज दे
ये बादल तेरे मेरे बीच बारिश हो रही है, मैं चिल्ला रहा हूँ दर्द से और सोच रहा हूँ उसका अर्थ क्या है। मैं सोच रहा हूँ मेरा फर्ज क्या है। जैसे जैसे दिल की चोटें खाता वैसे पता चलता होना होता मर्द क्या है। ना मैं नहीं हूँ कोई शायर, बातें बनाने की फितरत है दिल में पर लिखता हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ कोई कायर। मैं नहीं हूँ कोई कायर, मैं हूँ बहुत ही मार। मैं दुनिया घूमूं जैसे पहिया टायर, मैं फायर चाहता मैं हो जाऊँ रिटायर। आई ट्राइड लेकिन यहाँ दिल के यहाँ बजते सितारे बार कहानीकार। और हाँ, मेरा चांद नहीं दिखा मुझे फिर कभी। बादल आए बादल बरसे बादल छटे, कहीं रात की अमावस आई फिर चांद आया पर वैसा नहीं आया। मेरी शायरी से ना मुझको आंको, जहाँ कलम छोड़ूं मैं वहाँ मुझ में झांको। मेरी शायरी से ना मुझको आंको, जहाँ कलम छोड़ूं मैं वहाँ मुझ में झांको। So good. I'm just like, I have teared up because it's so good. And my nose is already blocked because I have a cold. So I have to. Uh, uh, okay, I'm back. I'm back. You'll probably think I'm the most rondu person in the world, but I'm really not. I just let the art move me the way it's meant to. And that's all it is. I don't want to hold back. And I kind of learned this lesson, I would say a couple of years ago. I was like almost a year into the channel. And, when things would like start like making you feel a lump in your throat, you'd start like controlling yourself because the camera is on. And then it was like, I don't know when the switch went off. I think it was during Coke Studio season 14. The switch just went off and I was like, why? Why to hold back? Just let the art move you and take you with its flow wherever it's meant to take you, right? So that's what happens. Anyway, so this as it I mean, the waves of emotions I was feeling as this track was progressing, that's it. I will just say that I live for days like this. I live for moments like this. Um and it just gives me so much joy. And then I just like when I feel like I'm filling up with that kind of joy, when I feel so moved by something, then I just cry because how else do emotions like overflow, right? That's the only way they know how to. So that's why that happens. And that happened at the end of this track. It was so freaking good. I don't even know where to start talking about it. This was the most beautiful music arrangement I have seen from Calm in this like um uh theme space, I would say, right? In this kind of a song. It was just beautiful because all it had was like, I don't know, एक या दो chords, I don't know क्या था, but वो ही strings पे वो ही एक चीज loop हो रही थी. और वो जो बारिश वाला जो background sound था, वो जो white noise, like that crackling, old cassette या old vinyl चल रहा है वैसा जो effect डाला था, it set such a gorgeous base for these lines. Such a gorgeous, and yeah, बाहर बारिश हो रही है. That's why throughout the track I was looking outside because mood perfect hai. And I was just like, the minute it started and I heard that crackling sound, and then he's talking about मैं लिखता हूँ और वो, that chalk on the black chalkboard वाला sound that was coming, वो pen to paper वाला sound नहीं था, वो chalk on the chalkboard वाला sound था, at least to me. Just transported you instantly to a simpler time and a simpler space. So good. Mix and master Vivek Thomas, beautiful, and guitars Bharat Chauhan, beautiful guitars. I can't get over the arrangement of this song. It just goes to show that sometimes less is more. Less is more. Simplicity is all you need. You don't need too much. You don't need too much. You just have to let
good writing and good singing and good delivery do the work. It's just so good. Okay, so that being said, again, like I said before I started this song, where would you have thought of these worlds colliding, भरत चौहान एंड सीधे मौत, राइट? बहुत ही अलग जोन्स में हम दोनों को सुनते हैं, लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा था कि ये साथ काम करेंगे। पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं अगर आप क्रिएटिव हो इतना और आपके माइंड में कुछ चीज का लाइक इंसेप्शन हो सकता है। सो एंड ऑफ कोर्स क्लियरली इट इज दे आर दोस काइंड ऑफ आर्टिस्ट। एंड दिस इज अगेन व्हाई आई कीप सेइंग दिस कि देयर नीड्स टू बी as much as you want to stay raw and authentic to your space and to your genre and all of that, there is always room to play in different spaces. And why not? Why not? You can always expand your artistry in different zones, and that is it. That is life. That is artistry. That is living a creative life. So I love that both Seedhe Maut and Bharat Chauhan are doing that and are not holding back or scared to experiment and scared to venture into different spaces. So that being said, क्या ही गाना है ये. I This is going to the top of the Rondu playlist. It has beat everything hands down. Everything I've heard recently, it has just beat it hands down. First of all, Bharat Chauhan has this. Let's just talk about his part. He has a, and I'm not comparing, but in many ways he reminds me of an Osho Jain because both of them, their voice texture and their singing style and their delivery style, their production style, is in that space where it automatically takes you into Guzra Hua Zamana. You know, they just have this nostalgic like tinge in their voices, and to me, um, the way Bharat Chauhan sings is in that very, like, I listen to him when I want to be in a, I won't say melancholic space, but in just like a deeply slow pace of life. And that is something that our minds automatically associate with Guzra Hua Zamana, right? Well, where the pace of life was slow, where the pace of life was relaxed, where we paid more attention to um, the present moment. It was easier to, I would say, pay attention to because there were lesser distractions in those times. So his voice has that quality of taking you back to that space. Just immediately you get transported. So that I feel is a gift, and that of course is also his skill set where he delivers and sings in that way. And then the I just can't. It's just the guitar and that, again, like I said, that static effect and that whole like um बारिश हो रही है बाहर, or it's just the lines that were being said was so beautiful. So beautiful. You just can't help but smile. But you're also sad, but you're also smiling. And then when Calm entered, oh my God. I feel like we don't give enough credit to this side of Calm. I honestly feel that. Um, I don't think I have heard any Calm song in this space where his writing has not blown me away. And just his tonality and the way he flows on the music is just, and you would never think, you would never expect, you know, Meko you know what? Before I talk anymore, I'm just gonna listen to it again. It's been a while since I've listened to a song again in a reaction. I have to do it today because I know a lot of thoughts will come to me. So I'm just gonna do it. I must. One, two, three, play. सब कुछ लिखूं या कुछ भी ना लिखूं, क्या ही लिखूं कि तुझको ना लिखूं, भटक रहा हूं इन अंधेरों में यूं ही, नाराज चांद है या तारों की कमी, जो ख्वाब देखे थे इन आंखों ने कभी, उन ख्वाबों की कहीं राख भी नहीं, कहा था मुझको जिसने घर कभी, रुखसत हुआ जला गया वो सभी, वफा से ही मुझे वफा की उम्मीद है, गम मिले तो आज वो ही करीब, मेरी शायरी से ना मुझको आंको, जहां कलम
झांको मेरी शायरी से ना मुझको आंको जहाँ कलम छोड़ूं मैं वहाँ मुझ में झांको कलम मैं छोड़ू जब तुझे मैं दिखूंगा जैसा हूँ असल में मैं दिखूंगा तुझे जब आंखों से पर्दा हटाएगी तो बगल में रह पर बगल में रहना तू असल ना किसी की नकल तू रह और अगर तू नकल तो तेरी इस कमल सी शक्ल का करूँ क्या मैं ये शायरी है तेरे लायक नहीं तो शायद ही तेरे किसी काम आएगी और अब भी है खटकती तेरी आँख में ये खाली घर है जैसे सूखी कोई नदी और तू है जो आज चल परी बनी पर है समंदर फिर भी खारा ही तो ही ये खेल है ऐसा जिसमें फंस चुके हैं मैं और अभी तो क्या हुआ अगर मैं लिखते वक्त बनूं शराबी और इस समय इन चीजों में नहीं दिखती कोई खराबी जब गुजरेगा ये पल तो आएगी नहीं तो याद जरा भी मेरी शायरी से ना मुझको आंको जहाँ कलम छोड़ूं मैं वहाँ मुझ में झांको मेरी शायरी से ना मुझको आंको जहाँ कलम छोड़ूं मैं वहाँ मुझ में झांको गिरा के मुझे इन अंधेरों में माजी मेरा साथ आया है गिरा के मुझे इन अंधेरों में माजी मेरा साथ आया है अजब शख्स है कत्ल भी किया और गले भी लगाया है गले भी लगाया है छू के जलाया है जलना नहीं तो सूरज नहीं तो चांद है मेरा दिखे तो है उजाला नहीं तो है अंधेरा और हर रात तेरे अलग बेस आंखों माऊं तुझको अलग देश मैं अलग से गरजते ये बादल तेरे मेरे बीच बारिश हो रही है मैं चिल्ला रहा हूँ दर्द से और सोच रहा हूँ उसका अर्थ क्या है मैं सोच रहा हूँ मेरा फर्ज क्या है जैसे जैसे दिल की चोटें खाता वैसे पता चलता होना होता मर्द क्या है ना मैं नहीं हूँ कोई शायर बातें बनाने की फितरत है दिल में पर लिखता हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ कोई कायर मैं नहीं हूँ कोई कायर मैं हूँ बहुत ही मार मैं दुनिया घूमूं जैसे पहिया टायर मैं फायर चाहता मैं हो जाऊँ रिटायर आई ट्राइड लेकिन यहाँ दिल के यहाँ बजते सितारे हर बार कहानी कार और हाँ मेरा चांद नहीं दिखा मुझे फिर कभी बादल आए बादल बरसे बादल छटे कहीं रात की अमावस आई फिर चांद आया पर वैसा नहीं आया मेरी शायरी से ना मुझको आंको जहाँ कलम छोड़ूं मैं वहाँ मुझ में झांको मेरी शायरी से ना मुझको आंको जहाँ कलम छोड़ूं मैं वहाँ मुझ में झांको Oh, so beautiful. Oh my God, these guys. I can't praise them enough for whoever thought of this collaboration. And I can't. इतना like beautiful song बहुत दिनों बाद सुनने को मिला है honestly. And what I like about it also is that वो इतना like उसमें कोई वो नहीं है कि हम ऐसे हैं और आप हमें छोड़ के चले गए और ये है और वो है. It is very simply, there's such a beauty to surrender that we overlook so much in life. We just feel like उसने मुझे छोड़ दिया या वो नहीं है या ये है तो वो आप ऐसे थे और आप ऐसे थे और आप बुरे थे और हमारे साथ ऐसा किया आपने. उन सब थीम्स पे इतने सॉन्ग्स बनते हैं और बहुत लाइक आई फील स्पेशली इस स्पेस में um, कि जब वो सरेंडर वाले गाने आते हैं ना कि I am broken and टूटा हुआ because you're not here, or those kind of things, like just acceptance of your state of being and not trying to hit back at someone and not trying to blame someone. उसमें कुछ like negative energy के लिए space ही नहीं होता है जब और बस आप
सरेंडर कर चुके हो कि ये है सिचुएशन और ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, एंड आई हैव नो क्वाल्म्स इन टॉकिंग अबाउट इट. I don't want to hide behind anything anymore, any sort of fake bravado or any sort of, and I'm just going to say things as I'm feeling them and as I'm seeing them. And जैसा भी मैं महसूस कर रहा हूँ, I'm just going to say those things. And I'm just going to say what you are to me and how I feel about you. And there's just so much beauty in that. I love it. I love it. I can't praise calm and encore enough. And especially, that part, like I was saying before, I heard it the second time, we don't praise this side of calm enough. And he's definitely like one of the best poetic writers in the scene, without a doubt. And I have to say, even also because I just heard encore in the Ishka Da Jahan track, and I was talking about this there as well. There is a bhariness and um there's a punch that's um required through just your voice tonality, right? Flow, delivery, वो सब बात की बात है, लेकिन just the voice you adopt. Um, Encore does that so well in every track, whether it's a khatta flow or a Namastute or any track or a Ishkada Jahan or this. The voice you decide to adopt, and because he's got several voices, we've seen that in his discography, like several voices. He knows exactly which voice to adopt for which section of the verse and which song. It is so good to see because the way he started, and the way he changed, um, इन द मिडल वेयर ही सेड और सोच रहा हूँ उसका अर्थ क्या है, वहां पे सिर्फ चेंज हुई वॉइस, और फिर जो वो स्पोकन वर्ड में जहाँ फिर से टोनालिटी चेंज हुई, द वे ही प्लेज विद दोज वॉइसेस to deliver the right impact of the lines he's saying is just so freaking beautiful. It just takes the writing up by 10 notches when he chooses his voices, for lack of a better phrase. So beautiful. Yeah, I just can't. I mean, this is artistry par excellence. And the merging of these worlds is what is so important to highlight. Like, look at the possibilities. You don't have to confine artists to just one space. Everyone can play so beautifully. Now see, like Seedhe Maut did a track on Koksu. Of course, that track was nothing amazing, but at least you know they attempted that, they tried it, they played in a different space with a different, like, a collaborator on the thing with them. Here they did the same thing. I feel like the more you can go out of your comfort zone, and the more you just try, nothing is holding you back from trying. It's free. Try karna free hota hai. The more you will learn about yourself as an artist, the more you will expand as an artist, and the more you'll expand as a human at the end of that thing. Like I keep saying, like, a new you is born out of everything you create. So you are your art's baby. So I feel like the more they do things like this, the newer versions of themselves they turn into, and the newer and bigger and wider range of things they'll give us in the future. So I love that this happened. This collab happened. Now I'm quickly going to read the lyrics because they're such beautiful lines. We must highlight them. Intro भरत चौहान. सब कुछ लिखूं या कुछ भी ना लिखूं, क्या ही लिखूं कि तुझको ना लिखूं. ओहो भाई साहब, मैं रो दूंगी फिर से, like seriously. Oh, I'm really trying to control. भटका रहा हूँ इन अंधेरों में यूं ही, भटका रहा हूँ इन अंधेरों में यूं ही, नाराज चांद है या तारों की कमी, जो ख्वाब देखते थे इन आंखों ने कभी, जो ख्वाब देखे थे इन आंखों ने कभी, उन ख्वाबों की है कही है राख भी नहीं. कहा था मुझको जिसने घर कभी, ये लाइन, I mean, you all know, or do you all? I have this like emotional attachment to the word घर right now. So just this line really hit me. कहा था मुझको जिसने घर कभी, रुखसत हुआ जला गया वो सभी, वफा से ही मुझे वफा की उम्मीद है, गम मिले तो आज वो ही करीब. This is such a surrender verse कि यही है अब, यही है reality. I have no, I'm just surrendering to it and I'm just gonna tell you क्या हाल है as it is. मेरी शायरी से ना मुझको आंको आंको, जहाँ कलम छोड़ूं मैं वहां मुझ में झांको. These lines. Yeah, okay. Was to come. कलम मैं छोड़ूं जब तुझे मैं दिखूंगा,
जैसा हूँ असल में मैं दिखूंगा तुझे जब आंखों से पर्दा हटाएगी तो ओके आई एम गोना ruin this. I don't know where the pauses were, but कलम was too calm. कलम मैं छोड़ूं जब तुझे कलम मैं छोड़ूं जब तुझे मैं दिखूंगा जैसा हूँ असल में मैं दिखूंगा तुझे जब आंखों से पर्दा हटाएगी तू बगल मेरे पर बगल में रहना तू असल ना किसी की नकल तू रह और अगर तू नकल तो तेरी इस कमाल सी शक्ल का करूं क्या मैं ये शायरी है तेरे लायक जिस द फ्लो ही टुक अस ये शायरी है तेरे लायक नहीं ये शायरी है तेरे लायक नहीं तो शायद ही तेरे किसी काम आएगी और अब भी है खटकती तेरी यहाँ कमी ये खाली घर है जैसे सूखी कोई नदी ही इज ऑल्सो डन द घर थिंग और तू है जो यहाँ आज जल परी बनी पर है समंदर फिर भी खारा ही तो ही अरे यार ये खेल है ऐसा जिसमें फंस चुके हैं मैं और आप भी तो क्या हुआ अगर मैं लिखते वक्त बनूं शराबी और इस समय इन चीज़ों में नहीं दिखती कोई खराबी जब गुजरेगा ये पल तो आएगी नहीं तू याद जरा भी ओहो यार ये थोड़ा हो गया ना गिले शिकवे वाला सीन बट ठीक है जस्ट स्टेटिंग इट एज इट इज देन कोरस देन ब्रिज भारत का ब्रिज है यहाँ गिरा के मुझे इन अंधेरों में माजी मेरे साथ आया है दिस इज वेयर आई ओपन द लिरिक्स मेरे साथ आया है गिरा के मुझे इन अंधेरों में माजी मेरे साथ आया है अजब शख्स है कत्ल भी किया और गले भी लगाया है छू के जलाया है माय गॉड्स वसरी ऑनकोर जलना नहीं तू सूरज नहीं तू चांद है मेरा दिखे तो है उजाला नहीं तो है अंधेरा और हर रात है तेरे अलग भेस आ घुमाऊं तुझको अलग दिस अलग रात दिस होल प्ले इज आ घुमाऊं तुझको अलग देश में अलग से गरजते ये बादल तेरे मेरे बीच बारिश हो रही है मैं चिल्ला रहा हूँ दर्द से और सोच रहा हूँ उसका अर्थ क्या है मैं सोच रहा हूँ मेरा फर्ज क्या है जैसे जैसे दिल की चोटें खाता वैसे पता चलता होना होता मर्द क्या है यार बहुत ही बहुत ही पेन मैं चिल्ला रहा हूँ दर्द से और सोच रहा हूँ उसका अर्थ क्या है मैं सोच रहा हूँ मेरा फर्ज क्या है क्या है जैसे जैसे दिल की चोटें खाता वैसे पता चलता होना होता मर्द क्या है वो मर्द होना आई एम ट्राइंग टू लाइक decode this is it to hide your pain no right ना मैं नहीं हूँ कोई शायर बातें बनाने की फितरत है दिल में पर लिखता हूँ क्यों कि मैं नहीं हूँ कोई कायर बातें बनाने की फितरत है दिल में पर लिखता हूँ क्यों कि मैं नहीं हूँ कोई कायर यस दैट इज he's answered my question I'm writing because I'm not a coward and मैं बातें नहीं बनाऊंगा even though that is फितरत I'm just gonna tell you what I'm feeling मैं नहीं हूँ कोई कायर मैं हूँ बहुत ही माहिर मैं दुनिया घूमूं जैसे पहिया और टायर मैं फायर ये चाहते मैं हूँ जॉन रिटायर मैं हूँ जाऊँ रिटायर आई ट्राइड लेकिन यहाँ दिल के हैं बजते सितार हर बार कहानीकार स्पोकन वर्ड और हाँ मेरा चांद नहीं दिखा मुझे फिर कभी बादल आए बादल बरसे बादल छाते कई रात की अमावस आई फिर चांद आया पर वैसा नहीं आया चांद कभी वैसा नहीं आता है My God, guys, I'm so overwhelmed and so full of emotion. I just can't describe what I'm feeling. After hearing the song, I feel like words will fail me. So I will stop talking now because when you listen to songs like this, in fact, the beauty of it is that every time you listen to a song like this, it will make you feel a different kind of way, which will not like Chand वैसा आया नहीं कभी, वैसा impact आएगा नहीं कभी. Every time you hear it, you will feel a different way. It'll never be the same. Some other chord in your heart will get hit every time you listen to it, like some different chord. It's just, there's a something to be said for the word um
the word sukoon, which does not, I found it's one of my favorite words, and I've never found an exact translation for it in English. Like, it's very difficult to describe what sukoon really means, right? But it encompasses so many thoughts and emotions in it, that word. And songs like this, as sort of melancholic and, in a like sad space they are, and I don't think sad is a, like, the connotation is bad, but it's not really. um so that space that they are in, ऐसे गानों से बहुत सुकून फील होता है, और बहुत उसका वो है ट्रीटमेंट से, द काइंड लाइक द सेम थिंग आई सेड, जो भरत चौहान की वॉइस आपको पिछले ज़माने में लेके चली जाती है इंस्टेंटली, जो वो बहुत ही स्लो लाइफ वाला ज़ोन था, वहाँ पे सुकून आपको महसूस होता है इमीडिएटली, वैसा सुकून आपको इस गाने से महसूस होगा, बिकॉज़ इट जस्ट टेक्स यू इनटू दैट स्पेस. So there's something to be said about, you don't get sukoon from just happy emotions or happy places. You can find sukoon in all, ups and downs of life. Because when you're sitting and thinking about someone, उसमें भी एक अजीब किस्म का sort of सुकून मिलता है, right? Even though they're no longer with you and you're sad about it. But just that moment where you're reminiscing of it, there's a certain like calmness and tranquility and peace in that. I don't know, I'm just saying whatever. But I hope some of you understand what I mean. So I feel a lot of sukoon with songs like this, and I'm going to put this at the top of the Rondo playlist. It's beaten everything hands down that I've heard in a very, very long time. So thank you, Bharat. Thank you, Seedhe Maut. Thank you, Vivek Thomas, and just everyone who's involved with this track. Thank you for the music. Thank you for collaborating, and thank you for writing like this and moving us in this way. We need it. We need it. So, yay. On that note, thank you guys for recommending the song and requesting it. DM me over there for other recommendations. This song is going on loop. And go check out the Rondo playlist. That's also linked in the description. Tuk, 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 tuk. Do support the channel. Take care of yourselves. Live long and prosper. मेरी शायर